Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the bacterial cell structures which are remaining. So let's move to the classboard. So dear students, we're discussing the bacterial cell structure in which we have discussed flagella, villi, and capsule, slime, and cell wall. Now the other structures which are present in bacteria, it includes so you may draw along with me. So this is the structure of bacterial cell, and here we go. So that is basically flagellum. इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। और ये किसके साथ अटैच होता है? दिस वन इज द basal body, clear, and this is the cell wall. इसको भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में, and this is basically the storage granule. And this is actually the ribosome.
and the plasma membrane. Plasmid. And this structure is known as mesosome. And this is the nuclear body or chromatin body. So let us start from the plasma membrane first of all. तो सेल वॉल को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, डिटेल के साथ कंपोजिशन और इसकी सारा एनालिसिस, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव और उसके अलावा भी आर्कियोबैक्टीरिया एवरीथिंग, ठीक है। और बेसल बॉडी ये सबसे रोटेटरी मशीन के काम कर रही होती है जिसके साथ अटैच होता है फ्लैजिलम जो इसको लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। इसकी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं क्लिफ के मज़ीद इसके आगे के फर्दर क्लासेस 5 क्लासेस, एट्राइकस, पेरिट्राइकस, एक्सेट्रा ना द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के बाद इमीडिएटली उसके नीचे क्या मौजूद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। So cytoplasmic membrane in the bacteria, it is basically very thin, and delicate, and it is composed of lipid bilayer, प्रीवियस लेक्चर में आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाई थी जिसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, लिपिड बाइलेयर, एंड हेल्प्स in the transport of proteins and nutrients and electrons and water एक्सेट्रा, ठीक है। और ये इतनी डेलिकेट होती है कि अगर इसका रप्चर हो जाए, इट्स रप्चर leads to the death of bacteria, क्योंकि सारा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से ये इस एतबार से इम्पोर्टेंट है। but there is a little bit difference between the eukaryotic and prokaryotic plasma membrane. Only difference between prokaryotic and eukaryotic plasma membrane is that the bacterial membrane lacks
कोलेस्टेरॉल। हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें हमने पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एज वेल। जो उसमें लिपिड्स थे वो फॉस्फोलिपिड्स प्लस द कोलेस्ट्रॉल उसमें शामिल थे, यानी कि स्टीरोल्स शामिल थे। लेकिन इसमें एक ही वाहिद ऐसा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर कि दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट लैक्स द कोलेस्ट्रॉल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें इसको, ठीक है। So that is about the plasma membrane. I'm going to box it. This organelle, this detail, ठीक है, plasma membrane. तो इसमें box कर लिया. Now the ribosome. So as far as ribosomes are concerned, इसका box मैं यहाँ पर लेके आऊँगा. So ribosomes, the prokaryotic ribosomes, आप इसका डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, याद होगा आपको। दे आर लिटिल बिट स्मॉलर देन द राइबोसोम्स ऑफ द यूकैरियोट्स। 80s 70s याद आ गया आपको। सो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स are a little bit smaller. ये कितना होता है dear students? They are 70s. Clear? Then the eukaryotic which are ATS. Clear? They are composed of proteins plus RNA. Clear? So that is its composition, and its function is, एक ही function है dear students, यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, function is protein synthesis. Clear? So function is protein synthesis as far जो कि एक नॉर्मल राइबोसोम का फंक्शन होता है. So that is the box of ribosome, and they are freely present in cytoplasm. Okay, so that is its location. तो ये दो पॉइंट्स हो गए, दो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हो गए. Now coming towards the plasmid. So as far as plasmid is concerned, यहाँ पर देख सकते हैं plasmid, or it is also known as extra chromosomal DNA. It is also known as extra chromosomal DNA, या इसको plasmid कहते हैं, ठीक है. It is a double-stranded DNA. It consists of double-stranded, दो strands हैं DNA की, circular, it is circular, as you can see, circular in structure, in shape. और इसका यहाँ पर function क्या है? It is related to, they possess genes for antibiotic, heavy metals, virus, and the pest resistant
So genes for antibiotic, heavy metals, viruses, and some pest resistant. So these are the genes, and ये basically इसके ऊपर मौजूद होते हैं. It is also now used. It is also being used in genetic engineering. आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक के अंदर भी, ठीक है. Used in genetic engineering. वहाँ पर एज अ वेक्टर ये यूज होता है, एज अ वेक्टर. वेक्टर किसे कहते थे? ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है. Here that is called as vector. So it is heavily used in molecular research, genetic research purposes. जहाँ पर भी ये वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. So they're small and circular and self-replicating. They're also self-replicating and involved. तो ये कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं डियर स्टूडेंट्स? याद होगा आपको. सो कॉन्जुगेशन में. सो आपको बताया था कॉन्जुगेशन में जब ये कॉपी अपनी बनाएंगे, ठीक है, प्लाज्मिड, एंड दे आर पास्ड थ्रू दिस द पिलाई, इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन. लेकिन किस सेंस में? कॉन्जुगेशन के किस सेंस में आगे बात हो रही है कि ये मटेरियल है जो कि बेसिकली इन पास होता है ड्यूरिंग द process of. So that's it. It is the information for the plasmids. Now, what are the mesosomes? So dear students, mesosomes basically they are, आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई और एक इस तरह से एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर करूँगा मीजोसोम की. सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन invaginates into cytoplasm and forms a structure called mesosome. Clear? So this is called as basically the mesosome. और ये बेसिक इट इज़ इन्वॉल्व इन, ये 4 फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है. इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन number 1, DNA replication. Number 2, in cell division. Clear? 2 points. Third one, for the extracellular transport of exocellular enzymes. Exocellular ऐसे एंजाइम जैसे स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स, ठीक है. तो जो एंजाइम्स बाहर चाहिए होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी इन्हीं का रोल होता है. एंड नंबर 4, it also contains the respiratory enzymes. Respiratory enzymes are also present. So this is basically the mesosome. So this box is for the mesosome. Clear? Hopefully.
आपको क्लियरफाई हो गया, मतलब कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई, सर्कुलर सा एक स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज मेसोसोम। और ये इनकी इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर इन्वेजिनेट हुआ है, ठीक है। इसके ये 4 मेजर फंक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन में यानी कि एंजाइम्स मौजूद हैं जो इसमें हेल्प करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, देन एक्स्ट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ द एक्सोसेलुलर एंजाइम्स एंड द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स विच, जो कि रेस्पिरेशन यानी कि यहाँ पर जो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसकी बात हो रही है। आपने पढ़ा हुआ रेस्पिरेशन के जो उनसे फिज, ग्लाइकोलिसिस, आगे चलकर चैप्टर नंबर 11 में डिटेल से डिस्कस होगा। द क्रेब्स साइकिल, फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लाइकोलिसिस, देन द फैटी एसिड्स जो है उसकी थी इसमें ऑक्सीडेशन, और फिर उसके बाद बाकी जो प्रोसेसेस होती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह वगैरह, चूँकि ये इनके अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होते, सो दैट इज़ द रीज़न इनके अंदर वो जो बाकी के उनसी जो क्रेब्स साइकिल है वो इसके अंदर रन एज सच नहीं करेगा। क्लियर? नाउ इज द न्यूक्लियर बॉडी। सो न्यूक्लियर बॉडी यहाँ पर इसका याद रखिएगा, दे कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल chromosome. Now this is the box for this nuclear body. Clear? So the bacteria, they consist of single chromosome. So that is why ये वाहिद ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर हैप्लॉइड, बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। सो दे आर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। हैप्लॉइड किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऐसे सेल या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल के अंदर अनअपियर्ड क्रोमोसोम हो तो उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं, चूंकि इसके अंदर है ही एक क्रोमोसोम और वो इस तरह से कम्पैक्टली पैक हुआ है, व्हिच इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सर्कुलर डीएनए पैक्ड विद हिस्टोन्स, हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक होता है, ठीक है। एंड कॉल्ड, इसको क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं, क्रोमैटिन बॉडी, न्यूक्लियर बॉडी, ठीक है, या फिर न्यूक्लियाइड, ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड। दे आर प्रेजेंट in the center of the cell, ठीक है, in region, जिस रीजन में ये मौजूद होंगे उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। चूँकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता बिकॉज दे लैक द इंटरनल सेल मेम्ब्रेन्स, तो इनका जिस रीजन के अंदर ये वाला सेंट्रल पोजीशन में जिस रीजन में इनका जो क्रोमैटिन ये बॉडी यानी कि इनका क्रोमोसोम पड़ा हुआ है उस रीजन को न्यूक्लियोइड रीजन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्लियर? एंड it can be seen in light microscope after staining with Fuel-Gen stain। एक ख़ास किस्म की स्टेन है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो अगर उससे स्टेन किया जाएगा तो तभी इसका जो हम लैब के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर इसका ये न्यूक्लियोइड रीजन, इसका क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर की गई है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से,
that E. coli consists of E. coli, उसमें जो उसका DNA मौजूद है, its length is 14,000 micrometers in length. So that is the information regarding the nucleoid region or nucleoid. Clear? So ये इससे related information सारी इस बॉक्स के अंदर मौजूद है. Now the storage granules. चूँकि बैक्टीरिया आमतौर पर इस तरह के environment में रेस्टोरेंट्स रहते हैं जहाँ पर खुराक की कमी होती है, फूड जो होता है वो डेफिशिएंसी होता है, फूड डेफिशिएंसी होती है. तो जब कभी इनको वाफिर मकदार में एक्सेस में फूड मिला तो ये क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं. दे यूज टू स्टोर दैम. लेकिन स्टोर किस तरह से करते हैं? ग्रेन्यूल्स की शक्ल में. ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन करने लगा हूँ, द ग्रेन्यूल्स. तो ये दो तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं इनमें, एक फूड ग्रेन्यूल्स और एक वेस्ट मटेरियल ग्रेन्यूल्स. ठीक है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे. अब जो फूड ग्रेन्यूल है, द फूड ग्रेन्यूल, जिसमें ये खुराक को स्टोर करेगा. ठीक है, 4 किस्म की खुराक है, यानी कि इनका फूड है जो अगर इनको एक्सेस पे मिल जाए तो ये इसको स्टोर कर लेते हैं. द स्टोर glycogen, number 1. Number 2 is fat. Number 3 is sulfur. And number 4 is phosphate. Whenever they found in excess quantity, तो ये इन ग्रेन्यूल्स के अंदर इनको स्टोर कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर फिर इसको इस्तेमाल भी करेंगे. तो ये 4 हैं इसमें फूड जो ग्रेन्यूल्स में जो कंपोनेंट, ग्लाइकोजन, फैट्स, सल्फर एंड फॉस्फेट. ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने जो इसको मार्क कर लेना है. इनमें से माइट भी आपको इन 4 में से 3 जो है बताए और चौथा जो है कोई और शामिल करके बताया जाए कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्रेन्यूल इसे जो न्यूट्रिएंट है जो कि ये फूड ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर नहीं करते. एंड द अदर आर द वेस्ट मटेरियल ग्रेन्यूल्स, वो भी इन्हीं के अंदर मौजूद हैं. ठीक है, जैसे कि ये वेस्ट के लिए है. ठीक है, सो वेस्ट मटेरियल ग्रेन्यूल्स, दे आर यूज्ड टू स्टोर द वेस्ट which is to be excreted into the external environment. So these include number 1 is alcohol. Number 2 is acetic acid, which is basically a fatty acid. Alcohol usually जो है मौजूद होती है, और acetic acid. And number 3 is the lactic acid. ये वेस्ट है इनके लिए, तो ये इन ग्रेन्यूल्स के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं. सो दिस ग्रेन्यूलर बॉडीज, इनको ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं या ग्रेन्यूलर बॉडीज भी कहा जाता है. तो ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में. क्लियर? तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ से बहुत अहम इंफॉर्मेशन है. इन तीनों में जो वेस्ट में भी स्टोर, जो वेस्ट मटेरियल के तौर पर ये स्टोर हो रहे हैं, 3 हैं, चौथी कोई और दी जा सकती है. बताएं जी इसमें से कौन सा वेस्ट नहीं है. लाइक इसमें से ये तीनों देख के चौथी लाइक फैट डाल दिया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेस्ट मटेरियल फॉर द बैक्टीरिया, या जो कि वेस्ट ग्रेन्यूल्स के अंदर जो स्टोर नहीं होता. सो दैट तो आंसर विल बी द फैट. या इनमें से 3 को देख के चौथा यहाँ से किसी को ऐड करके पूछा जाए इनमें से कौन सा जो कि इनका न्यूट्रिएंट है जो कि ये स्टोर नहीं करते. सो लाइक दैट, इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. क्लियर? वन मोर थिंग,
दैट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज प्रोटोप्लास्ट। इसको भी लिख लें, प्रोटोप्लास्ट। सो इसका डिफरेंस शायद पहले भी मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 4 में, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट का जो डिफरेंस है। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम क्या कहते हैं, और द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन and everything inside it. Everything inside it means कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद है, दैट इज बेसिकली द प्रोटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म क्या है, पहले से डिस्कस कर चुके हैं, द साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, द प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट बिकम्स द प्रोटोप्लास्ट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। तो इसका डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको, और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखनी डियर स्टूडेंट्स, अब एनिमल सेल द माइकोप्लाज्मास, इनके अंदर तो सेल वॉल है ही नहीं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल नहीं है उनके लिए फिर हम प्रोटोप्लास्ट वाला जो वर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनमें सिंपल फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट एक्चुअली जो है ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके पास सेल वॉल मौजूद है। सो एवरीथिंग बीनीथ द सेल वॉल, जो सेल वॉल के नीचे जो कुछ भी मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। मीन्स के सेल वॉल को बाहर निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए इस बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में से, तो इट विल बी कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट। तो लेकिन ये वाले टर्म, प्रोटोप्लास्ट वाले टर्म हम एनिमल सेल्स के लिए या प्रोटोजोन्स के लिए या फिर माइकोप्लाज्मा के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज दे लैक सेल वॉल। तो ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म तक महदूद है, आमतौर पर उसी के लिए, आमतौर पर यूजुअली इट इज़ यूज्ड फॉर ओनली फॉर देम, क्लियर। और इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स बच गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस हो जाएंगे। कवरिंग्स जो कि आमतौर पर कैप्सूल, स्लाइम, इनके अलावा कुछ बैक्टीरिया के अंदर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे स्पोर्स एंड सिस्ट, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो उसको भी हमने अभी डिस्कस करना है इसके बाद, क्लियर। फिर उसके बाद आगे चलते हैं इस पर। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू है, इसको ज़रूर इसी कंपैरिजन में ही आपने इसको याद रखना है। आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत अहम ये वाला आज का टॉपिक था। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे स्पोर एंड सिस्ट का डिफरेंस, और साथ में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।